Is my screen visible to you all, guys? Now visible? So if I have, let's say, five objects of the class, which class did we make it last time? Mobile class. So if this is my class and I have five objects of this class, okay, and all I am doing is creating them using new keywords. The first object, understand this concept clearly, okay? So it will have what? MNO, MName, model name, and size. Okay. So at which address have we got this? Address 1000, right? Am I audible to you all? Yeah. So at what address did I get the first object at? The second object is at address, let's say 2000. So is this continuous memory allocation or it is non-continuous memory allocation? So if one integer is 4 bytes, one character is how many bytes? One character. Yes, Umar? I can't hear you, Umar. 2 bytes. So how many bytes of memory will it take to store this object? 2 bytes for 4 bytes for manufacturer name, correct? And 2 bytes for one character means how many bytes for Apple? 10 bytes. So here these are how many? 15 space pro 6, right? 6 means 12 bytes. And again double is 8 bytes. So how much bytes of memory is it taking to store one object? 34 bytes, right? Total. So total 34 bytes. So from address 1000 to 1033, one object is being stored, correct? So the next object should have been stored at 1034, but the next object is being stored at which address?
No, here in our diagram. So where is the next object stored at? 2000. So are these objects stored continuously? No, they're not stored. There's a gap, no, from 1033 till 2000. There's a gap. Lot of gap is there. Correct. So if this object would have been stored at address 1034, then I would say they are continuously stored. Correct. So if the next object would be stored at which address then? 1068, right? So now if I want such an arrangement, okay, let's first try to use this arrangement. Now if I have the third mobile over here, 103, we had made this I guess last time, right? Now where will this object be stored at? So my question is there a difference? And let's say S1 is pointing over here. S1 is pointing over here. S1 is the reference over here. Let me show you all the option A first. So if it was not in this arrangement and if it was in this arrangement, this was at 1000, this was at 2000, and this was at 3000. So which address is one Apple stored at? 2000 and 3000, correct? Who is pointing to Apple? Let's say M1. So how will I make this object now? And who's pointing to 2000? M2. And who's pointing to M3? 3000. So how will we make these three objects? We will make them the way we had made them over here. Three objects pointing by three new, correct? Samsung, OnePlus, Apple, whatever. Okay, so let's make a new package again. Today we are going to teach array of objects.
Day 12 array of objects. And it is a separate package. I can have a class with the same name. So now if I use this mobile M1 is new mobile, which is my M1 Apple, right? This is my M1, which is my M2. This is my M2, and this is my M3. So how many reference do I have? Three references because they all are geographically scattered in memory, correct? So what if I want them continuous memory allocation? So here I need three different references, M1, M2, and M3 because they are geographically scattered, and I have to make an object, new mobile, right? So what is M1? M1 is just the reference, correct? So in the memory, it will look something like this. Okay, I'll remove this class now. I need some space over here. So in the memory, how will it look like in the stack? That M1 is pointing to 1000 and M2 is pointing to 2000 and M3 is pointing to 3000, right? This is the stack will look like. So I have three references pointing to three objects because they are geographically scattered in memory. Now what if I bring them closer and make them continuous allocation? Yes, that will be pointed to which one? First one. Then I can arrange them in an array. So here also I have to create the three objects. So I will have to use this new keyword because three objects are being created, correct? But I will not have to create three references. I can create an array of references. I can create a so if I have the reference name M1, so this object is pointed by M1 of 0, and the second object is pointed by M1 of 1, and the third object is pointed by. So when I say array, it gives me continuous memory allocation, and so on and so forth. I can increase as many objects I want, correct? So this, so how will this look in the memory then? This will look like, this will look, now as these three references are scattered, this will look something like this. M1, which is the array name, M1 of 0 is pointing to which address? 1000. M1 of 1 is pointing to
1034, and M1 of 2 is pointing to 1068. So these are an array of references. These are individual references, and because data is scattered in the memory, if data is stored continuously, then I will have array of references. Zero, and I can increase this to whatever limit I want as per my usage, right? So let's try to do it. So here, what you have to do, you have to understand is how do we create an array in? Have we discussed that? Have you done any programs on array initially? Did we do? Oh, okay. So let's first do array demo. So first, let me do array. Array. If I want to store the ages of 5 people, I have one option that is make 5 different variables. So this is not efficient way of programming. So rather, what I can do is I can make an array, right? So then you have to first allocate memory for this 5 integers. So you say this square bracket is an indication that this is an array variable, right? Without the square bracket, it is a simple variable. When I put an array besides it, it becomes a array variable, and then you can say new, and how many integers you want to store. So like this. On the LHS, you just make the variable into an array. On the RHS, you use new keyword and you allocate memory for them. So now these integers will be getting memory from this ages array, and then you can either manually assign the values. Yes. So I need to store these numbers, right? So these numbers will be stored at some place. So I need to store 10 here. Okay. That is when we are doing non-primitive thing. We have primitive type of data and non-primitive type of data, correct? So when I have primitive, that is integer, so if I want to store the age of a person, this integer will take some memory for 4 bytes. Yes or no? This will take 4 bytes, correct? So either I can make integer age 1 equal to 19. Means what happens? So if my 19 is the integer value at address 1000, who is pointing to it? Age 1. So what happens in memory? In your stack, age 1 is pointing to which address? 1000. And what is that 1000? 19. So I require 4 bytes to store them, correct? So these 4 bytes will take some memory.
Similarly, if I want to store ages of 5 people, so if I do this style of programming, or what will happen behind the scenes? One more variable will be allocated memory of how many bytes? 4 bytes at whichever location which memory is free. So let's say memory was free as 77 address 7777. So where will 21 get the memory at? So age 2 is getting memory at which address? It is in the stack. Okay. Then I make the third variable age 3 equals to 22. So what happens? One more variable gets declared. So each is getting 4 bytes of memory. Correct. So how much memory? How much memory have I consumed? How much memory have I consumed over here? This is address 12,000. I have consumed 12 bytes, but they all are scattered in memory. Correct? Different places. Now, what if I want them all to be together? I want this to look something like this, and they all should be together, not scattered. Then what do you think I'll have to do? Make an array. That array will store how many integers? So that array will require how many bytes of memory? How many bytes of memory will that array require? 12 bytes to store 3 integers, correct? So here, if I now make an array age and I make a reference pointing over to address 1000, so now how much bytes of memory do I need to allocate? So I will say I want memory for how many integers, and who will point to it? Ages. Now is age a simple variable or is it an array variable? And where ages is pointing, so this will be like this. So what it does is it first reserves the memory. So this for 1004 and 1008. So it will reserve how many bytes of memory? Because I want to store 3 integers. So in the stack, what it will do is it will reserve the 12 bytes of memory at address 1000, 1004, and 1008. Correct? This memory is now reserved. Okay. So earlier year, ages 2 would get memory at which address I don't know. It can be at 2000, 3000, or it can be at any address, right? But here, now I am sure that when my three numbers will be stored, whatever the three numbers are. So let's say the first number is 29. Now the memory for that number is reserved from before only. At which address will it go at? 1000. So array what it does is it reserves the memory upfront, and then whenever you use that want to store the data, it gets allocated in the memory which was earlier reserved by the array. So when I say ages of 0 equals to 29, what happens? Does it make a fresh object of 29 again?
Does it make a fresh memory location for 29 and store it over there, or does it store 29 at the reserved place? So, so when it reserves, it must have allocated some memory to it, means reserve some memory for it earlier. That please keep this 12 bytes aside, correct? Your new keyword that please keep this 12 bytes aside, because I'll be using it to store three integers. Getting it, Ali? So that when I say ages of 0 is 29, it doesn't go at any third address. That ages of 0 has been stored at address 8000. This is ages of 0. Will it go there and store it, or is the space reserved for this 29? Because if I come over here now, integer age 4 equals to 25. Will it get space at 12004 just besides this? Is it guaranteed? We don't know, right? So it will allocate 4 bytes, but where it will allocate, I don't know. But what an array does is it array reserves the memory for the data upfront, so that when I will actually use that, when I actually want to store that data, I know at which 4 bytes it will be stored at. So I have to keep some quota aside, right? So here ages is 0. Are you getting the point? So this is ages of 0 and this is ages of 1. Okay, so this will be like an array. So, but that array where it is pointing is an integer array. So 0 index is pointing to an integer. That integer is at 1000, and 1 index is pointing to an integer which is at 1004, and 2 index also pointing to an integer 0, 1, and 2. Let's correct. And 0 is mapped. What is the name of the array? Ages. X, Y, Z. So now if I want to store the weight of 10 people or the height of 10 people, what do I need to do? Yes, Ali. If I want to store the height of 10 people, so height in feet, array of double, right? And I will say height is an array. And how much space will I keep aside now? Correct? I'll be giving 80 bytes aside. 80 bytes kept aside by using new double. So when I allocate the first height, it gets that 80 bytes. One of that 8 bytes gets consumed now. Correct? Are you getting it? So here next time this will not take extra 8 bytes. It will consume the 8 bytes allocated from the 80 bytes over here. Are you getting? But the advantage I get is my all data is in continuous memory location now. Now my this height and this height, I can guarantee that if this is at address 7000, so I am guaranteed this will be at address 7008, because I have allocated I have reserved the 80 bytes upfront. Getting it? And as I use the array, those bytes which I have reserved are being consumed now. Got it? So now once I have this array reserved, then I want to store 5 ages in this. So I can do it the hard way, that I can individually allocate the values, okay, which we 5 times. So now this 17 is occupying the first 4 bytes from this array.
and I can do it 5 times like this, right? But this will not make sense. This will, so better what do we do then? If I want to initialize the array, we use a loop, right? Yeah. So how will we do that then? I'll take a for loop. I start from which index? Indexing in an array starts from 0, correct? This much we are comfortable now from the days of C programming. So I'll not be going deeper into that. I start from 0. I less than how much? Ages dot length and I plus plus. Okay. So I'll not do this type. I'll take a scanner if I want to take user input from the user. And then I'll sys out, enter a number, correct? Now this number which I will enter will get memory from which memory allocation? A separate memory allocation or the one which has been reserved for the ages. So this message will be displayed how many times on the screen? 5 times. So when he says 17 for the first time, where will 17 be stored at which index? The 0 is with this variable. So like this. So this whatever 20 bytes were reserved, they have been consumed. And if you want to display, then you can run another fresh for loop and you can display ages of I. Is that making sense? So I am accepting the 5 ages and I am displaying the 5 ages. So you save it, right click, run as, enter a number 17, 19, 21, 22, 18, and it says you enter I as follows, correct? So as they are continuous memory allocation, I can traverse them in one iteration. If there were 5 different ages, 5 different variables, then would have been difficult for me to use a for loop for such arrangement, correct? So now if I want to find the sum of the ages, maximum of the ages, or do any programming, I can do it in a more efficient way. So if I want to find the average age, I want to find the average age. So in this case, what would I have done? Ages plus age 1 plus age 2 plus age 3 plus age 4 divided by 4, right? What do I do in this case? What do I do in this case? So let me take a fresh for loop. What we can do, integer sum equals to 0, run the for loop again and do what? Sum is plus equal to ages of I, correct? Sum with a small s and come outside and display. Then so what is the average age? Double average age will be what? Sum divided by what? 5 or 5 or the length of the array. Don't hard code the don't hard code the value. And then this out average age is plus average age. Save it, run. Okay, 10.
14, 12, 16, 18. Average is 14. Getting it? So it becomes easier for me to program them. So the syntax remains the same. What we have done in C, C++, or how to iterate to an array and do the task. Okay, just how to create the array, this task, this is the syntax. Okay, if you want an array with the values of this, if this is just array, this is array declaration. I have done what? Declared the array, right? And to initialize the array, I run a separate for loop. Correct? This will initialize the value for me. I can do both together also. If I want to array of whole numbers, I can do it like this, which we do in C program. Okay, now you can start your directly you can iterate through and display this. So this is declaring and initializing at the same line. Declaration plus initialization at the same line. Okay, getting it? And then rest, I guess you all should be comfortable with remaining remaining operations. Yes, tell me. Memory will be the same, just that it will get continuous memory allocation. So once I have data continuously stored, I can do the iteration faster on the data. So if I have 1,000 people and I want to find the average age, will you store 1,000 different variables and then do a sum on them? Better we store them in an array and then we can loop to that array and to get the sum of the ages. So data gets stored continuously in an array. Okay, and array is also homogeneous. So the same array which we had in C, C++. Advantage of an array is continuous memory allocation. And what is the limitation of an array? It is homogeneous in nature. Means an array of integer will only store integer. If I try to store a character in an array, if I try to store, will it allow me? This should not be right to run this code and check. Okay. Okay. So if you play around with this array later on, so if this C is being stored, then it has stored the ASCII value of this C. Then let's try to run the code and check. Let's try to run the code and check. What is the ASCII value of capital A, small a? 97, right? So what should be the sum of this if we okay first let's display this. Let's first display it. So if I display this, what should it display me? Let's comment out the above stuff so that it doesn't disturb us. What will the output of this code? Any guesses? 11 9711, correct? See, got it? When I'm storing a character, it will convert it into an ASCII value of that character and then store. So that's why it permitted. Okay, so such trivial questions some interviewers are fond of. I am not fond of asking such trivial and sort of
what do you, this is not in general knowledge. This is just, this doesn't have anything to do with my Java development or my logic as a Java developer. But some interviews they start with asking such sort of puzzled questions. I don't know the reason why, what they get out of it. But if an interviewer asks you this question, you should be comfortable that will it store? Yes, it will store, but it will store the ASCII value of that object. Correct? Now, if I give you a task now, accept an array of 5 integers and display me the second maximum number from that array. Come on, maximum and second maximum, do both. I'll be, तो जितने आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए सबका एक एक कॉलम बनाओ. तो पहले मैक्स का कॉलम बनाओ. फिर मैक्स के बाद आप बनाओ सेकंड मैक्स का. ठीक है, ये 2 कॉलम बन गए. ठीक. अब लेट्स स्टार्ट द रन. तो अभी आपके मैक्स में क्या है? मिनिमम इंटीजर, मिनिमम इंटीजर वैल्यू है, लेट्स से 0 है. 0, हाँ. तो 0, पुट 0 इन मैक्स एंड पुट 0 इन सेकंड मैक्स ऑल्सो. अभी दोनों में 0 0 है. ओके. और अभी थर्ड कॉलम बनाओ नम. आर में जाओ, आर वाले उसमें जाओ. हाँ, नम. नम में क्या आ गया? नंबर्स का फर्स्ट नंबर. तो नम में क्या आ गया? 12. चलो आ गया ना, क्योंकि एरे में से फर्स्ट नंबर आ गया. फॉर ईच लूप हुई. ठीक है. अब क्या कंपेयर कर रहे हैं आप? इज नम ग्रेटर देन मैक्स. मतलब क्या? अब टी वाले कॉलम, गो टू टी, टी कॉलम. टी 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 फॉर टैंगो. टी वाले कॉलम में जाओ. हाँ. अब इसको जो इफ है ना, इफ उसको लिखो इज. इज. और अभी क्या कंपेयर कर रहे हैं आप? नम ग्रेटर देन मैक्स, यानी इज 12 ग्रेटर देन 0. ट्रू क्या फॉल्स? तो ट्रू लिखो उसके आगे. ट्रू. ठीक है. अब क्या करेंगे फिर आप? जो मैक्स है वो जा रहा है सेकंड मैक्स में. जो मैक्स है वो कहाँ जा रहा है? सेकंड मैक्स क्या हो जा रहा है वापस? मैक्स. मैक्स नम नहीं. लाइन नंबर 7 क्या, कैसे पढ़ेंगे लाइन नंबर 7 को? नहीं, लाइन नंबर 7 7. लाइन नंबर. तो पढ़ेंगे कैसे? तो लिखेंगे ऐसे, पढ़ेंगे कैसे उसको? एक है लिखना, एक है पढ़ना. तो लिखा हुआ है सेकंड मैक्स इक्वल्स टू मैक्स. हाउ विल यू रीड इट? यू विल रीड इट दैट मैक्स विल गो इनटू सेकंड मैक्स. राइट टू लेफ्ट होता है ना असाइनमेंट. तो मैक्स जा रहा है सेकंड मैक्स में, सेकंड मैक्स मैक्स में जा रहा है. आर यू श्योर? नीचे कहाँ भी लिखो a इक्वल टू 10. नीचे आओ, नीचे आओ. लाइन नंबर 22 या 22 पे. 22 के कॉलम. हाँ, यहाँ लिखो a इक्वल टू 10. अब a जा रहा है 10 में कि 10 जा रहा है a में? तो हाउ डू यू असाइन? राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट? तो अभी सेकंड मैक्स जा रहा है मैक्स में कि मैक्स जा रहा है सेकंड मैक्स में? तो मैक्स का वैल्यू क्या है? मैक्स का वैल्यू 0 है. ऊपर क्या है ना, आपने लिखा हुआ है. मैक्स से कंपेयर किया ना, असाइन थोड़ी किया. सिर्फ कंपेयर करने से थोड़ी असाइन होता है. तो अभी मैक्स के अंदर है क्या अभी? 0. तो वो 0 कहाँ जाएगा? तो वो सेकंड मैक्स, लाइन नंबर 3 में लिखो. सेकंड मैक्स के अंदर 0 लिखो, लाइन नंबर 3 में. सेकंड मैक्स, जो मैक्स का वैल्यू सेकंड मैक्स में आ गया, सेकंड मैक्स में क्या आ गया? 0 आ गया. ठीक है. और जो तुम्हारा नम है वो मैक्स बन गया.
तो नम क्या है? तो नम नम क्या है अभी? नम क्या है? नम कॉलम में वैल्यू क्या है नम कॉलम में? तो 12 का डाल दो, मैक्स में डाल दो। तो मैक्स वाले कॉलम में 12 लिख दो, हाँ। ठीक है। तो जब भी कोई नंबर मैक्स से बड़ा होगा, तो जो मैक्स है वो सेकंड मैक्स में जाएगा और नम आएगा मैक्स के अंदर। ठीक है। So what it is doing is that whenever the elder sister is buying a new dress, she is giving her dress to the younger sister. Okay. So whenever the num will be greater than max, जो num है वो max में आएगा, और जो max किस में जाएगा? सेकंड मैक्स में। ठीक है। अब ये हो गया, if में गया तो will it go in else? अगर if में गया तो else में, else if में। ओके, else if है वो क्या है? तो क्या कंडीशन लिखा हुआ है else if में, पढ़ो। तो अभी वो if में गया तो else if में नहीं जाएगा ना, वो किसी एक में जाता है। किसी भी एक में जाएगा, तो इफ में गया तो एल्स इफ में नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट अभी लूप नेक्स्ट लूप विल इंक्रीमेंट। तो नम में क्या जाएगा अभी नेक्स्ट इटरेशन में? 55 नेक्स्ट वैल्यू ले लेगा ना वो। तो डालो, नम में डालो, 55 डालो नम वाले कॉलम में। अब अंदर आ जाओ। अब क्या पढ़ेंगे? नम ग्रेटर देन मैक्स मतलब क्या? 55 ग्रेटर देन, हाँ लिखो उधर टी वाले कॉलम में। और इफ को लिखो इज 55 ग्रेटर देन 12, ट्रू क्या फॉल्स? ट्रू। तो नाउ द एल्डर सिस्टर हैज बॉट अ न्यू ड्रेस 55,000 का। तो जो 12,000 का ड्रेस था वो किसको दे दिया उसने? यंगर सिस्टर को, राइट। तो क्या हो रहा है? मैक्स गोज इनटू सेकंड मैक्स। मैक्स क्या है? तो वो जाएगा सेकंड मैक्स में। तो सेकंड मैक्स क्या बन गया? 12 बन गया। और 55 बन गया। समझ में आ रहा है? इसमें गया, एल्स इसमें नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट लूप जाएगा, तो नम, अभी नम क्या हो जाएगा? नम क्या हो जाएगा अभी नेक्स्ट इटरेशन ना अभी। हाँ, तो जाओ नंबर डालो 65। क्या चेक करेंगे? इज ग्रेटर देन, यस। ट्रू क्या फॉल्स? ट्रू। तो क्या होगा अभी? हाँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट, क्या बात है, यू आर अ वेरी फास्ट लर्नर श्रुति, वेरी गुड। इसमें गया, एल्स में नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट में अभी नम में क्या आएगा? 85 आएगा। क्या चेक करेंगे? 85 ग्रेटर देन 65, ट्रू क्या फॉल्स? ट्रू है। तो क्या करेंगे? 85, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आया? 45, ठीक है। अब चेक क्या करना है, देखो। इज 45 ग्रेटर देन 85, ट्रू क्या फॉल्स? फॉल्स है। तो फॉल्स क्या जाएगा इसमें, क्या एल्स में? किसमें जाएगा? इफ में क्या एल्स में? एल्स में। और वहां भी आपने कंडीशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इज नम ग्रेटर देन सेकंड मैक्स। अब वो चेक करो, वी में लिखो, वी में, वी वाले कॉलम जाओ, वी वाले कॉलम में फॉल्स हो गया ना अभी। तो एल एल सिर्फ में जाएगा। तो वहां भी आपका कंडीशन है। नम क्या है अभी? सेकंड मैक्स से बड़ा है क्या? मैक्स से तो बड़ा नहीं है ना। तो वो चेक कर रहा है सेकंड सेकंड मैक्स से बड़ा है क्या। तो क्या है? इज 45 ग्रेटर देन, क्या पढ़ेंगे उसको?
सेकंड मैक्स से भाई, सेकंड मैक्स। लाइन नंबर 10 कैसे पढ़ेंगे? लाइन नंबर 10, नम ग्रेटर देन सेकंड मैक्स, है ना? तो नम में क्या है? हाँ, तो क्या लिखेंगे उसको? वी को लिखो, कॉलम नंबर वी में इज, इफ को लिखने का इज 45 ग्रेटर देन सेकंड मैक्स में क्या है? 85, है ना? सेकंड मैक्स में क्या है? हाँ, तो ट्रू क्या फॉल्स? तो और उसके आगे एंड लिखा है, एंड में क्या होना चाहिए? बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू, है ना? तो अगर पहला ही फॉल्स होगा तो सेकंड का फायदा नहीं है ना चेक करके। अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया और आपने एंड लगाया है, तो सेकंड ट्रू होगा तो भी कोई फायदा नहीं है ना चेक करके। तो इसके लिए वो इसमें एल्स में जाएगा नहीं, और लूप लूप विल कंप्लीट, करेक्ट। फिर अभी नेक्स्ट क्या आएगा? आई में नेक्स्ट क्या आएगा अभी? नम में 9, है ना? ओके, ऐसा एक नंबर लो जो इन दोनों के बीच का है। लेट से टेक 75, 9 निकाल, 9 निकाल दो, 9 निकाल दो, उससे या 75 लो। क्लिक ऑन द ई वाला कॉलम, क्लिक ऑन द ई कॉलम, ई वाला कॉलम पे क्लिक करो, ई वाले कॉलम पे। हाँ, नाउ टेक 75, 9 की जगह पे 75 लो। नो नो, कंट्रोल जेड, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर। हाँ, ठीक है, यहाँ पर चलेगा। हाँ, टेक 75 नाउ, यस। तो नाउ सेकंड मैक्स विल चेंज, करेक्ट। हाँ, तो अब आ जाओ, अब नम में क्या आएगा? 75, राइट। हाँ, तो अभी क्या पढ़ेंगे? इज 75 ग्रेटर देन, मैक्स में क्या है? मैक्स में क्या है? लास्ट वैल्यू क्या है मैक्स? हाँ, तो ट्रू क्या फॉल्स? हाँ, फॉल्स लिखो। जब फॉल्स लिखा तो किस में जाएगा? इफ में क्या एल्स में? अगर कंडीशन इफ का फॉल्स तो किस में जाएगा? इफ में क्या एल्स में? अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? इफ के अंदर क्या एल्स के अंदर? तो अभी एल्स में जाएगा, तो वहां भी कंडीशन लिखा है आपने, नम ग्रेटर देन सेकंड मैक्स, मतलब क्या? नम में क्या है? नम में क्या है? लास्ट वैल्यू क्या है नम कॉलम का? हाँ, तो लिखो ना फिर इधर, वी वी कॉलम में इज 75 ग्रेटर देन सेकंड मैक्स में क्या लास्ट वैल्यू क्या है? सेकंड मैक्स में मैम, आप एल इफ में है ना अभी, तो इफ तो फॉल्स हो गया ना, तो एल इफ क्या लिखा हुआ है पढ़ो। तो नम के अंदर क्या वैल्यू है? लास्ट वैल्यू क्या है नम? और सेकंड मैक्स में लास्ट वैल्यू क्या है? तो फिर वो लिखो ना। तो ये ट्रू है क्या फॉल्स है? ट्रू है, ठीक है। और सेकंड सेकंड क्या चेक कर रहे हो? नम इज नॉट इक्वल टू मैक्स, क्या बोल रहा है वो? नम मैक्स नहीं है, यानी क्या? नम क्या है? नम मैक्स है क्या? तो नम के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो उधर स्पेस दो, स्पेस, कॉलम वी को थोड़ा बढ़ा दो, कॉलम वी को थोड़ा लेंथ बढ़ाओ, विड्थ बढ़ाओ कॉलम वी का। अच्छा, ऊपर से ड्रैग करो, वी जहाँ लिखा है ना, वी जहाँ वी लिखा है ना, वी ऊपर ऊपर, जहाँ वी लिखा है, कंट्रोल जेड, शिफ्ट हो गया वो। जहाँ वी लिखा है ना, वी और डब्ल्यू के बीच में जाओ, वी और डब्ल्यू के बीच में देखो, जाएंगे तुम? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, कंट्रोल जेड, वी और डब्ल्यू के बीच में लेके जाओ, वो लाइन है ना वी और डब्ल्यू के बीच में,
ऊपर ऊपर। हाँ देखो अभी आया, अब बढ़ाओ। हाँ, तो अभी क्या बोल रहा है वो, 75 ग्रेटर देन 65 ईयर्स एंड द एंड लिखो, कंट्रोल जेड, व्हाई यू इरेज इट, क्लिक 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 आउटसाइड नो, यू सिलेक्टिंग इट। हाँ, एंड लिखो, एंड डबल एंड, हाँ, एंड नम, नम क्या है, नम में क्या है, हाँ, और 75 नॉट इक्वल टू 85, थोड़ा और बढ़ा दो उसको, थोड़ा और बड़ा कर दो वी वाला कॉलम, और 75 नॉट इक्वल टू 85, ट्रू क्या फॉल्स, तो दोनों भी ट्रू हो रहे हैं। तो फिर क्या करने का, जब एंड में दोनों ट्रू हो रहे तो फिर एल्स इसके अंदर भी जाएगा, करेक्ट। और क्या चेक करेगा वो, तो नम का वैल्यू क्या है, वो का डाल देगा उसको सेकंड में, समझा। ऐसा, फिर अभी नेक्स्ट नंबर क्या लेगा वो, तो अभी नेक्स्ट क्या आ रहा है, 6। हाँ, तो क्या लिखेंगे, इज 6 ग्रेटर देन फॉल्स, तो फिर एल्स इस पे जाएगा। और क्या चेक करेंगे, इज 6 ग्रेटर देन, दोनों भी फॉल्स है तो आगे जाएगी, क्योंकि जब एंड में क्या है, अगर एक भी फॉल्स रहा तो आगे जाते हैं ना। फिर नेक्स्ट क्या आया, 555, छोड़ दो, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं ना, जब वहीं फॉल्स हुआ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्या आ गया फिर अब नम में, 555, अब क्या चेक करेंगे, इज 555 ग्रेटर देन, 555 ग्रेटर देन 6, क्या बोल रही है, मैक्स क्या है, कंडीशन क्या था लाइन नंबर 6 के ऊपर, नम ग्रेटर देन, नम में क्या है 555 और 6, और मैक्स में क्या है, हाँ, तो ट्रू क्या फॉल्स, तो ट्रू, तो इसके अंदर आएगा। क्या करना है फिर जाके, जो मैक्स में हो सेकंड मैक्स में, आराम, पहले पहले वो करो, हेलो, फॉलो द एल्गोरिथम, पहले क्या करना है, पहले सेकंड मैक्स को एडजस्ट करना है, रिमूव रिमूव दिस टू लाइन। हाँ, पहले किसको एडजस्ट करेंगे, हाँ पहले वो लिखो ना, फॉलो द एल्गोरिथम, तो वो क्या हो जाएगा, 85, और मैक्स क्या हो जाएगा फिर अभी, समझा। और फिर लूप लूप खत्म हो गई, तो आप डिस्प्ले कर रहे हो मैक्स इज 555, मैक्स सेकंड मैक्स इज 85, गेटिंग इट। तो ऐसे करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट, टाइपिंग को नहीं बोलना है कि मैंने खुद से किया है, आपने खुद से टाइप किया है, उसको खुद से करने को नहीं बोलते। खुद से करने को उसको बोलते हैं कि आपने पूरा सोच समझ के खुद से एल्गोरिथम लगा के लॉजिक लगा के लिखा है, उसको बोलते हैं टाइप, उसको बोलते हैं सेल्फ। यू हैव जस्ट टाइप्ड इट बाय योरसेल्फ, दैट डजंट मीन दैट यू हैव रिटन इट बाय योरसेल्फ। हैड यू रिटन इट बाय योरसेल्फ, ये आप खुद करते थे। When I asked you in initially, when I asked you, did you write it by yourself? You said, yes, sir, I wrote it myself. That was you typed it by yourself. Had you wrote this by yourself, ये ड्राई रन जो हमने किया है, मैक्स सेकंड मैक्स नम, इतना आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही कर लेते हैं हर इटरेशन को इटरेट। और ये है ड्राई रन, ये इंपॉर्टेंट है। जो एलएचएस जो लेफ्ट साइड में जो कोड है, ये तो मिल जाएगा आपको कहीं पर भी, गीक्स फॉर गीक्स पे और चैट जीपीटी पे, स्टैक ओवरफ्लो पे। पर ये जो राइट साइड में ड्राई रन है जो हमने किया है अभी, ये आपके माइंड में रहता है।
तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ड्राई रन के अंदर, कि मुझे कोई ड्राई रन एक्सप्लेन कर दे, कोड ला के दिखा दे, उससे मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं पहुंचता है कि आपने मुझे कोड दिखा दिया था, आई एम सेटिस्फाइड। नो, I will be satisfied when you will explain me the dry run, each iteration, what has happened behind the scenes. Are you getting it, Shruti, what I'm trying to say? Yeah, so I want this attitude that you should write the code. If you are taking the code from somewhere for some reason, then you should be able to explain me the entire dry run of that code. Unless and until you understand the entire dry run of the code, do not copy it. Once you सी द कोड, ट्राई टू ड्राई रन इट, ओके ये वेरिएबल में ये वैल्यू है, फिर ये इटरेशन में ये वैल्यू हो गया, फिर ऐसा हो गया। जब वो समझ में आ जाए तब बोलना ओके, फिर आपको कॉपी करने का हक है। फिर आपने वो कॉपी किया तो कोई ऐसा मतलब अनएथिकल काम नहीं किया, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करके जाके साइन लेके आ रहे हो एग्जामिनर का ये बोल के कि मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, तो कॉलेज में तो ये चल जाएगा, बट इंटरव्यू में ये नहीं चलेगा। Okay, stop sharing. Very good. This was a complex program, but I guess you all should be able to start muscle building at such level. Okay, please. Hmm. Yeah, yeah, it's visible. Mm-hmm. Okay. That's hmm. Oh, yeah, I can see that we are on the code. Okay. So where is the third maximum now? I was seeing third maximum also. Okay, you commented that, or what? Okay, what I can see that you are doing is, can you dry run this now? Let's take this code onto the Excel. Okay. No, 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 no. Go to that code. Copy the line number 6 till line number 24. No, till line number 26 because you have done loop, right? Till 26. Yeah, copy this. Oh no, is it your? That's the main, right? Okay. Okay, then copy till from 6 to 24. 6 to 24. Yeah, copy this. Yes, and paste in Excel now. Yeah. So let's dry run this. Let's see what algorithm he has used. So paste it. Hmm. Cancel. Yeah, now go to column number uh, M, column number M. Yeah. Now what you have made an array and then you have taken a new array. The space complexity of your program is double. You are taking an equal size array. So if my array would contain 1 million records, you are going to declare one more array of 1 million. So your algorithm will take twice the space. Yes or no? Yeah. So this is a
limitation of your algorithm, that your algorithm compared to Shruti algorithm is more space complex. Okay, let's check it further now. So we have an array called max, which is same as the size of ARR. Now, what you are trying to do is you're trying to copy that ARR of 0 into max of 0. So what is in max of 0 now? So do one thing, write the array ARR on line, write the ARR over here, 15, 12, 25, 7, 35, right over there, MNOPQ. Yeah, click on that. No, use, okay, activate. Yeah, but I guess it will charge you then. I will ask you to subscribe or register. Check. See. These are basic software you all should be having configured on your laptop. Stop sharing support. The basic software you should be. Now, how will we do it? Let's copy it on the paint then. You deleted that. So you should open a new paint screen. No, who told you to save as? Can't you open two parallel paint screens? Then you should have kept this on the new one. No, you could have saved that. If your research was good, you could have published that. Then again, you have to type all that stuff. Okay, now draw me this array ARR. हम्म, इनके इंडेक्स देखो रेड कलर में, 0 1 2 3 4। और इसके लेफ्ट में लिखो एरे का नाम ARR। थोड़ा ऊपर ले लो। हम्म। अब आपने एक और एरे बनाया है मैक्स नाम का, तो कॉपी करो इस एरे को। ये पूरा कॉपी कर लो। हाँ, इसका नाम नाम चेंज कर दो, सिर्फ वो वैल्यूज निकाल दो। वैल्यू कुछ नहीं रहेंगे मैक्स में। इसका नाम मैक्स रहेगा, वैल्यू खाली रहेंगे। तो समझा, तुम्हारा एरे डबल द स्पेस ले रहा है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इधर क्वेश्चन मार्क है। इसका नाम मैक्स है। फिर आपने क्या किया, जो ARR ऑफ 0 है उसको डाल मैक्स ऑफ 0 में, 15 यहाँ डाल दिया आपने। सही है। फिर आपका जे इंडेक्स 0 इंडेक्स पे है, तो आपका जे किधर है? इसको कट करके थोड़ा नीचे लो। दोनों को ऊपर आराम से। हाँ, तो अभी जे पॉइंट कराओ ARR के 0 पे। ऐसे ऊपर, ऐसे 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 वो नहीं, ऐसे ऐसे ऊपर से आएगा ना वो। हाँ ठीक है, जे इधर है, ठीक है, जे 0 पे है। अब क्या बोल रहा है आपका, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट आई प्लस प्लस। तो अब यू इटरेटिंग टू द एंटायर एरे। तो आप क्या कर रहे हैं, इफ मैक्स ऑफ जे इज लेस देन ARR ऑफ आई, मैक्स ऑफ जे 15 इज लेस देन 15, तो फॉल्स फॉल्स हो गया है। तो फिर इसमें जाएगा ही नहीं। तो फिर आगे बढ़े, तो आगे बढ़ेगा फिर। तो आई चला जाएगा 1 पे।
तो अभी आप आई भी पॉइंट करो फिर। अभी आई को भी जे के ऊपर डाल दो। ये आई भी है, तो अभी आई आ गया 1 पे, तो आई को आगे लाओ अभी। अभी आई ऊपर नहीं, ऐसे ऊपर उसका उसका अलग ट्रैक रखो ना। आई का अलग ट्रैक रखो, हाँ। थोड़ा सा राइट में ले लो और ताकि लगे कि 1 के ऊपर है, अभी 0, हाँ ये ठीक है। यू कैन टेक इट लिटिल बिट डाउन, ताकि वो जितना नजदीक रहेगा उतना रिलेट करेगा। हाँ तो ठीक है, तो उसको नीचे नीचे ले लो, फिर जे को मैक्स पे डाल दो फिर, और आई को फिर ऊपर ले लो। ठीक है, तो अब ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। अभी आई प्लस प्लस आई आगे चला गया। आई आगे चला गया अभी 1 से। अब मैक्स ऑफ जे क्या है? 15 है। इज लेस देन एयर ऑफ आई, यानी 15 लेस देन 12। 15 इज लेस देन 12 ना, तो अब फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो वापस ऊपर जाएगा, आई आगे बढ़ेगा। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है अभी? 15 इज लेस देन 25, अभी वापस फॉल्स हो जाएगा। या ट्रू हो जाएगा, ठीक है चलो। 25 ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू, ओके। तो ट्रू होगा तो क्या आएगा, अंदर आएगा। तो क्या होगा जब ट्रू होगा, तो जे प्लस प्लस, तो जे को पहले आगे बढ़ाएंगे, तो जे आएगा 1 पे। और क्या कर रहा है आपका एयर ऑफ आई? 25 आ रहा है इधर। हाँ, 25 1 पे आ जाएगा, मैक्स के 1 पे 25 आ जाएगा। हम्म, ओके ठीक है। फिर हाँ 7, 7, तो ये 7, 7 अभी 7 लेस देन 25, 25 लेस देन 7, फॉल्स। आगे बढ़ेगा, फिर आई आगे बढ़ेगा और 35 पे आ गया। तो अभी 35 लेस देन 25 लेस देन 35। ओके, जे प्लस प्लस ओके, 35 इधर आ जाएगा। ओके, तो क्या कर रहा है, तो लास्ट से कंपेयर कर रहा है सबको और फिर डाल रहा है ना? हाँ हाँ, इसमें बहुत बड़ा केमिकल लोचा है, एक बहुत बड़ा केमिकल लोचा है इसके अंदर। अब एक काम कर, इंडेक्स 4 पे डाल, 17 डाल। नहीं नहीं नहीं, 5 पे डालना, 5 पे। हाँ, इंडेक्स 5 पे डाल। तो तू क्या कर रहा है ना, देखा तू है ना, इनको असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर रहा है ना, मैक्सिमम को। फिर तो जे-1 जे-2 दिखा रहा है ना? ओके, अब यहाँ पर तू नंबर डाल दे 17। तो ये कौन सी जगह पे आना चाहिए तेरा 17? ये आना चाहिए तेरा इंडेक्स नंबर 1 पे, और फिर 25 आना चाहिए 2 पे ना। तेरा मैक्स एरे क्या कर रहा है, तेरे मैक्सिमम को स्टोर कर रहा है ना। तो सब इसकी जगह क्या बन रही है, 70 की जगह क्या बन रही है? हम्म,
हाँ हाँ, नहीं जी, you have entered it in ascending order, no, of the maximum. So you are getting this output. If you change the data, okay, इसको करो 15, 35, 25. Okay, do a control Z, do a control Z, control Z, control Z. Swap 25 with 35 in your original array. In your original array, 25, 35 को swap करो. हम्म, अब दिखाओ करके रन क्या चल रहा है इसका हिसाब से. अब स्टार्ट से आ जाओ वापस. तो सब निकाल दो, मैक्स को पूरा खाली कर दो, मैक्स में कुछ था ही नहीं. जे को जीरो पे लेके आ जाओ. इसे पूरा निकाल दो, हाँ. जे को जीरो पे ले आओ, आई को जीरो पे ले आओ. देखते हैं तुम्हारा लॉजिक कैसे काम कर रहा है. हाँ, तो मैक्स साइज एक एरे बन गया सेम साइज का. एयर ऑफ जीरो इज मैक्स ऑफ जीरो, 15 आ गया इधर. और जे जीरो पे आ गया, ठीक है. और आई अभी जरा जीरो चल रहा है. अब मैक्स ऑफ जे क्या है? 15 है. 15 लेस देन 15. तो आई को जब स्टार्ट में वन ना, देन ये क्यों खराब कर रहा है इटरेशन? एक ये फॉल्स आएगा हमेशा. वन से शुरू करना आई को इटरेशन को, है ना. वहाँ चेंज कर दे कोड में. आई को वन से शुरू कर, हाँ. ताकि वो एक वो हमेशा फॉल्स से आने वाला है वो, तो ठीक है. तो राजा अभी वहाँ भी चेंज कर दे, आई इक्वल टू वन कर दे, अगर कर सकता है तो. ठीक है, वन वन पे क्या है? नाउ इज 15 इज 15 लेस देन 12? फॉल्स है, लिखो. 15 लेस देन 12, आई कांट सी यू टाइपिंग. 12 फॉल्स. तो इसमें जाएगा ही नहीं. नीचे आ जाओ. तो अभी आई प्लस प्लस. अब आगे 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 ये हो गया. अभी क्या कर रहा है? 15 लेस देन 35. तो होगा. तो अब क्या करने का? हम्म. हम्म. ठीक है, तो आई प्लस, हाँ नहीं वो समझ गया मेरे को. तो यहाँ पर डाले 35. ठीक है. फिर आई प्लस प्लस 7. 7. 35 लेस देन 7. नो, तो फॉल्स. और अभी आई प्लस प्लस 25. तो क्या करने का अभी? 35 लेस देन फॉल्स. फॉल्स आएगा, हाँ. अब क्या करने का? क्या आएगा इसका आंसर? मैक्स इज 35 एंड सेकेंड मैक्स इज 15. अभी समझा? तो तेरा जब डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है कि तेरे सारे मैक्स जो है ना, एक के बाद एक के बाद बड़े 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 हैं, तब तेरा लॉजिक काम कर रहा था. कि पहले 15 था, फिर 25 था, फिर 35 था. या थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया तो कोलैप्स हो गया तेरा कोड पूरा. तो ना ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बैठ रहा है, ना ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बैठ रहा है. बट इट्स अ गुड अटेम्प्ट, आई वुड से, that you at least thought out of the box and you try to innovate your own algorithm. This So if I would take two interviews, I would select you, because you at least tried something new and it did not work out is secondary.
rather than people just copy pasting it from chat GPT and then showing that answer is coming. That will not impress the examiner. Rather, a person who is struggling to show and his output is not coming correct, but his attempt, that would be rewarded. So if I were the interviewer, these two candidates I was interviewing, I would choose a second candidate based on sheer attempt, and just I would reward him for the attempt which he has made. Even he could have copied the code from anywhere and pasted and shown. तो यहाँ पर कोई वो नहीं है, असाइनमेंट्स है, सबमिशन है, साइन लेना है मैम का जाके, वरना 10 मार्क नहीं मिलेंगे। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ आपका इंटरव्यू है सीधा। अब इंटरव्यू में जो बंदा ड्राई रन करके दिखा सकता है अपने लॉजिक को, वो किंग है। कबू शकूर इसको चेंज करो ना, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बैठ रहा है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ बैठ रहा है, ये आउटपुट ही नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे। रन करो इसको, या आउटपुट लेके 15, 12, 35, 7, 35 को रन करके देखो। हाँ, रन करो, अभी दिखाओ तुम्हारा क्या आ रहा है आउटपुट, मैक्सिमम क्या है, सेकंड मैक्सिमम क्या है, बस। हाँ, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी यार। इसमें लोग क्या करते हैं, नेस्टेड फॉर लूप लगाते हैं। द लॉजिक विच श्रुति शोड वाज द बेस्ट बिकॉज उसमें एक ही फॉर लूप में काम हो गया, यानी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन में काम हो गया, वरना ये जाता है ओ ऑफ एन स्क्वायर में अक्सर। तो ओ ऑफ एन में ही उसने करके दिखा दिया एक फॉर लूप यूज करके। वेरी गुड। यस प्लीज उमेर। लेट्स सी व्हाट हाफिज उमेर हैज डन। हाँ, सी हाफिज साहब, you have used in for loop, for loop, for loop. So your time complexity is 3n. So this is a very, what you will say, naive style of programming, that to achieve the output you keep on increasing the for loop. So no examiner will be impressed. So the task of just getting the output, we have now passed that level, that the output should come. Now the output should come in a more time complex way. So you are taking one for loop, another for loop, another for loop. So to find maximum two maximum numbers, you are taking three for loops. So if I ask you to display me the third maximum number, fourth maximum number also, will you take 5 and 6 for loops, Umer? So if I ask you display me the maximum, second maximum, so how many numbers did I ask you to display? Two numbers, right? So for that you have taken three for loops. Okay, the first for loop is for accepting. So for to display two numbers, you are taking two for loop, right? If I would say display me the first three maximums, what will you do? Take three for loops. Okay, show me the first three maximum numbers. Okay, customize this code to show me the first three maximized numbers. You have shown me the maximum number is 5, second maximum number is 4. No, 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 I got that. I understood this. I just code. My question is, I want you to display me the maximum, second maximum, and third maximum. So how will you display third maximum? Then again you will take a for loop and compare that with the second maximum, like that. Then show me how will you do it. I want you to display me maximum, second maximum, and third maximum. See what Umer has done is he's taken the first for loop. In the first for loop, he's found out the maximum number, that is 5. In the second for loop, he is comparing that the number should be
greater than the ith index, but should be less than the maximum, right? So in the third, greater than the second maximum, yes, less than the maximum and greater than the second maximum. Yeah. So if I ask you to display with third maximum, what will you do? Will you take one more for loop that great less than max, greater than second maximum, greater than third maximum, like that? So show me how will you show me the third maximum number? I want first, second, and third. Top three. See, guys, you have to appreciate the honesty and the effort he has taken to write the code by himself. By just looking at the code, I can make sure that this code has been written by Umar line by line, word by word. So even if the code doesn't click, the examiner will still reward you on your effort and honesty. But as we are preparing for an interview, we have to be strict with the candidate. So that's why I'm being a bit aggressive over here. I don't want you all to be complacent. Okay, I have shown the code, I am on track. No, you continuously have to strive. Yes, Umer, can you show me the code for first maximum, second maximum, and third maximum? And I'm impressed. Yeah, see, we had discussed time complexity in the initial stages for this very reason. Okay, Umer, what is the time complexity of your code in Big O? Your primitive operation is comparison, right? How many times is the comparison happening? Line number 15, 5 times. Line number 20, 5 times, right? So n plus n, right? So your time complexity is 2n, correct? So can you reduce the time complexity? So if I would give you find the first three numbers, it would go in 3n. Yeah, so that would be very slow, Umer. If you have 1 million numbers in an array, what you would iterate them 3 million times? Yeah. Yes, Umer. So we have now crossed that level that we were desperate to get the output, which we were in the first, second semester or in the academic. That is, the slip has been given to you and you have to solve the slip. Now, irrespective, whatever time complexity, you take 100 for loops, but you get the output. What would your teacher say in the class? Do 100 for loops, take 100 variables, consume the entire 4 GB of RAM, but I want the output. Else, I will not give you 30 marks. Now, this is not the race which we are running in. Now, the race which we are running in is I want. So, if you show the code, your code is correct. If Shruti shows the code, her code is correct. Who will I hire? Because she has used only one for loop, she's finished the job, right? Naturally, she'll be selected. So, for beginners, this code is okay. For beginners, this code is all right. That at least I'm comfortable with array, iterations, for loops. But now you have to continuously strive. So you'll have to put this code on chat GPT and tell convert this to single for loop, Omer, and see what chat GPT throws and then try to understand that. Getting it? हाँ हाँ. दिखाओ स्क्रीन 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 शेयर करो. कौन सा उमेर का क्या आपका? उमेर शो योर कोड प्लीज. मेरा आज वर्क फ्रॉम होम है तो मेरे पास लग्जरी था, ट्रैवल नहीं था मेरे, तो इसके लिए फिर मैं एक्सटेंड कर लिया मैंने. हाँ जी, यस श्रुति, which class, which line? If others who are getting desperate that the class should have ended 25 minutes ago, and why are we being retained and detained for the last 25 minutes?
So you all can jump off. Okay, 8:30 is the deadline. If anybody has any commitment after 8:30, there is no compulsion for him or her to wait. But if you all feel that the discussion is technical and it is good for my muscle building, so I would appreciate if you all wait. Yes, Shruti. Which line are you concerned with? Line number 11. वो क्या है श्रुति? दिख रहा है एरे का इंडेक्स होता है जीरो से ना, तो आप ये नहीं बोलोगे क्लाइंट को एंटर नंबर जीरो, तो उसने बोला एंटर नंबर वन, एंटर नंबर टू, एंटर नंबर थ्री, एंटर नंबर फोर, एंटर नंबर फाइव। तो उसने आगे जोड़ दिया I+1। तो वो लिख के आएगा एंटर नंबर। आई का वैल्यू क्या है फर्स्ट इटरेशन में? आई का वैल्यू क्या है फर्स्ट इटरेशन में श्रुति? जीरो। तो क्या लिख के आएगा? 0+1 क्या है? और उसके आगे कोलन जोड़ दिया उसने, कॉन्कैट कर दिया, तो लिख के आ रहा है एंटर नंबर वन। वो डिस्प्ले करने का तरीका है उसका, बस उसने यूजर फ्रेंडली वे से डिस्प्ले कर दिया। तो उमेर उसको कोड को वापस रन करो, बिकॉज योर नंबर वन एंड द नंबर इट सेल्फ इज लुकिंग द सेम, so we can will differentiate between that. So enter how I would enter 17, 23, so the people can differentiate. Run करो। Am I audible to you, Umer? Can you run this code? Yeah, ये lag हो रहा है। Enter 17 as the first number. So see, Shruti, it is prompting the user enter number one, and that number one is 17. Are you getting? It's just displaying the to the user. Very good. ठीक है मैम। ठीक है। Okay guys, then anybody else wants to share?